Assalamualaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from Amikankat Memorial Primary School, ઉમરવાડા, સ્ટાન્ડર્ડ 7, સબ્જેક્ટ હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ત્રીજો પાઠ સચ્ચા હીરા પાર્ટ 1માં જોઈ ગયા હતા. બરાબર. આજે આપણે તે પાઠમાંથી અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય શીખીશું. બરાબર. ચાલો આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ જોઈએ. अभ्यास पहलू है प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए. तो जुओ पहलो प्रश्न शू है तेना तमारे मौखिक एटले के मोढ़े उत्तर आपवाना छे. तो पहलो है चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? तो शू जवाब लखी सकीशुं आपणे? ए चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ. माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया. उस स्त्री के बेटे में शिस्तता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी. इसीलिए हम कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था. सही है. बीजो अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? એટલે કે તમારા ઘરમાં તમે તમારા માતા પિતાને કયા કયા કામમાં મદદ કરો છો? તો આપણે કયા કયા કામમાં મદદ કરતા હોય? તો શું લખી શકીએ આપણે? પોતે પોતાની રીતથી લખવાનું છે. मैं अपने घर में माताजी को रसोई घर में मदद करता हूँ. माताजी जो चीज़ मुझसे मंगवाती है उसे मैं देता हूँ. सब्जी काट देता हूँ. घर की चीज़ें यथास्थान पर रखता हूँ. घर की साफ सफाई करने में मदद करता हूँ. कपड़े लेकर अलमारी में रखता हूँ. ऐसे ही कितने काम मैं अपने घर में अपनी माता पिता की मदद करने के लिए करता हूँ. इस तरह से दूसरा उत्तर हम लिख सकते हैं. तीसरा, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? कई रीते आदमी साचो हीरो खरो डायमंड साचो डायमंड कई रीते बनी सके? बराबर. तो शू कही सके? आदमी ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना से सच्चा हीरा बन सकता है. बराबर. चलो हवे आपणे प्रश्न 2 जोईशुं. प्रश्न 2 में शुं छे? निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए. अहींया नीचे जे शब्द आप्या छे ते शब्दना अर्थ शब्दकोशमांथी शोधीने આપણે લખવાના છે. બરાબર. તો અહીંયા ડિક્શનરીનો ઉપયોગ શબ્દકોશ એટલે કે ડિક્શનરી. બરાબર. ડિક્શનરીના ઉપયોગમાંથી અહીંયા તમને અહીંયા જે 10 શબ્દ આપવામાં આવ્યા છે તે તમારે શોધીને લખવાના છે. ચાલો હું તમને કહી દઉં છું. બપોટી. બપોટી यानी કે બાપ की જાયદાદ, પોતાના બાપની જાયદાદ. વ્યથા दवा डालकर व्यथा यानी के पीड़ा, दुख, दुखी, व्यथित, दुखी. बराबर. नियति. नियति यानी के भाग्य, नसीब. प्रतिभा. प्रतिभा यानी के असाधारण बुद्धि शक्ति, असाधारण बुद्धि शक्ति. शौर्य. शौर्य यानी के शूरवीरता. रुचि, इच्छा, भाव. बातना. बातना यानी बंटवारा करना, हिस्सा देना. क्षमा, माफ़ी. उद्यान. उद्यान यानी के बाग. अमन. अमन का अर्थ क्या होता है? सुख, चैन, सुख, शांति.
चलो प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા તમને કહાની આપવામાં આવી છે, જેના માટે તમને અમુક મુદ્દા આપવામાં આવ્યા છે. એ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે એક કહાની એટલે કે એક સ્ટોરી, જેવી રીતના આપણે સચ્ચા હીરાની સ્ટોરી જોઈ તેવી જ રીતને અહીંયા તમને મુદ્દા આપવામાં આવ્યા છે. તો તેના આધારે તમારે એક કહાની બનાવીને લખવાની છે. બરાબર. જુઓ અહીંયા આપણને કયા કયા મુદ્દા આપ્યા છે. राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बुद्धि की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना. बराबर. તો આ કહાની જે છે તેને આપણે કોઈક એક શું આપવાનું છે, શીર્ષક આપવાનું છે અને એ કહાનીને આપણે પૂરી કરવાની છે. તો આપણે આ કહાની કઈ રીતે બનાવી શકીએ? હું અહીંયા તમને લખાવી શકતી નથી, તેથી એમ જ હું બોલી જાઉં છું, તમારે લખવાની છે. બરાબર. તો કઈ રીતે આપણે કહાનીને લખી શકીએ? તો લખી શકીએ રાજા કા બીમાર પડતા. तो આપણે एक ना ऊपर कर सके, एक राजा था, वह एक दिन बीमार हो गया. राजा की बीमारी के इलाज के लिए एक वैद्य को बुलाया गया. कई वैद्यों की दवा से भी राजा की बीमारी दूर न हुई. राजा रात दिन चिंतित रहने लगे. राजा के हालचाल जानने के कई लोग आते जाते थे. एक दिन राजा के यहाँ एक बुढ़ा आदमी, किसी बुढ़े की सलाह, એટલે કે एक दिन राजा के यहाँ एक बुढ़ा आदमी आया. उसने अब राजा से बातचीत की. वह समझ गया कि राजा को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बिना परिश्रम में वह बीमार पड़ गए हैं. उसने राजा से विनती की कि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनोगे तो आपकी बीमारी जरूर चली जाएगी. राजा बुद्धे अनुभवी की बात मानकर किसी सुखी आदमी का कुर्ता खोजने निकला. राजा सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था. इतने में उसने एक किसान को काम करते देखा. राजा ने उसे पूछा, तुम क्यों सुखी हो, कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? किसान ने बताया कि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर सारा दिन अपना काम करता हूँ, इसीलिए कभी बीमार नहीं पड़ता. राजा किसान की बात समझ गए. घर आकर सुबह से शाम तक अपना काम करने लगे तो उसकी बीमारी चली गई. तो यह पाठ को हम क्या नाम दे सकते हैं? जैसे कि हमने दिया सच्चा हीरा, पहली कहानी हमने जो पढ़ी वो, तो हम इस कहानी को क्या नाम दे सकते हैं? सुख का राज, ऐसा नाम दे सकते हैं कि सुखનું રાજ કઈ રીતે આવી શકે? તે કે એક રાજા હતો, સુખનું રાજ કઈ રીતે એમની પાસે આવ્યું? તે કે રાજા હતો, બીમાર પડ્યો, બીમારીના કારણે તે સારો ન થતો હતો, ઘણા બધા વેદોથી દવા લીધી અને છતાં પણ તેની બીમારી દૂર થતી ન હતી. દરરોજ બધા તેને એમ કે એ પોતે પણ ચિંતિત રહેવા લાગ્યો હતો. રાજાની હાલચાલ જાણવા માટે ઘણા લોકો આવતા હતા. તેના અંદરથી એક ઓલ્ડ વ્યક્તિ એટલે કે ઘરડા વ્યક્તિએ પોતાના અનુભવથી સલાહ આપી. તેને એવું પોતાને ખબર પડી જાય છે કે આ વગર પરિશ્રમ એટલે કે મહેનત કરતા નથી, એટલે કે મહેનત ન કરે એટલે આપણે શું પડીએ? બીમાર પડીએ. તો તેથી તે બુદ્ધા વ્યક્તિએ શું સલાહ આપી કે કોઈ જે સુખી માણસ હોય તો તેનો કુર્તો તમે પહેરો એમ. તો આ સાંભળીને રાજાને એવું થયું કે આની વાત કદાચ સાચી હોઈ શકે. તેથી રાજા પોતે એમ પેલા વૃદ્ધ વ્યક્તિના અનુભવની વાત માનીને કોઈ સુખી વ્યક્તિનો કુર્તો શોધવા માટે નીકળી જાય છે. અને ત્યાં તેમને એક કિસાન દેખાય છે. તે ખેતરની અંદર કામ કરતો હોય છે. એને જોઈને રાજા તેને પ્રશ્ન કરે છે. શું પ્રશ્ન કરે છે? તું કેમ સુખી છે? તને કોઈ દિવસ કોઈ બીમારી નથી થતી? કિસાન તરત જ એમ ખેડૂત
તરત જ શું બતાવે છે? મેં હરરોજ એટલે કે દરરોજ જલ્દી ઉઠીને આખો દિવસ પોતાનું કામ કરું છું, તેથી મને બીમારી થતી નથી. બરાબર, તેથી હું બીમાર પડતો નથી. અને રાજા કિસાનની વાત સમજી જાય છે અને ઘરે જઈને પોતાનું બધું જ કામ સવારથી લઈને સાંજ સુધીનું જાતે કરવા લાગે છે અને તરત જ ત્યાર પછી તેમની બીમારી જતી રહે છે. બરાબર, તો આ રીતે તમારે કહાની હિન્દીમાં તમારી નોટબુકમાં લખવાની છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પ્રશ્ન 4 જોઈશું. હવે प्रश्न 4 में शू है कि निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए. એટલે અહીંયા અડધી કહાની આપવામાં આવી છે. અપૂર્ણ કહાની એટલે કે કહાનીને પૂર્ણ કરેલી નથી. એ કહાનીને આપણે મૌખિક એટલે કે મોઢેથી બોલીને અને તેમજ લખીને પૂર્ણ કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે અડધી કહાની છે તેને હું બોલીને પૂર્ણ કરું છું. તમારે મારી સાથે સાથે બોલવાની તો છે જ, પરંતુ નોટબુકમાં લખવાની પણ છે. બરાબર. पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी. उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए. उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी. उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकोगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए. दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी. दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था. यह पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ. અહીંયા સુધી આપી છે, પછી આપણને ડોટ ડોટ આપી દીધા છે. તો હવે આપણે આ કહાનીને પૂરી કરવાની છે. શું કહાની છે? પહેલાંના એક જમાનાની વાત કરેલી છે. બરાબર. તો હવે જે માળા આપેલી છે તેમાંથી બંને માળા એક સમાન લાગી રહી છે. તો આ બંને માળામાંથી આપણે અસલી માળાને ઓળખવાની છે. બરાબર, હાથ લગાવવા વગર. तो चलो हवे આપણે આ કહાનીને પૂર્ણ કરીએ. उसने कहा कि महल की सभी खिड़कियां खोल दी जाए. जो महल की सारी खिड़कियां खोल दी जाए. जब खिड़कियां खुल गई तो बाहर से मधुमक्खियां असली फूलों की माला पर आकर बैठने लगी. बुद्धिमान दरबारी ने बताया कि आपके बाएं हाथ में जो माला है जिस पर मधुमक्खियां मंडरा रही है वही असली फूलों की माला है. सभी दरबारी अचंभे में पड़ गए. आए हुए दरबारी ने भी उसकी प्रशंसा की. राजा ने उसे भेंट देकर शाबाशी दी. इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है कि संकट के समय में भी धैर्य और चतुराई से काम किया जाए तो अवश्य सफलता मिलती है. यह कहानी को क्या नाम दिया जाए? चतुर दरबारी. बराबर विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे प्रश्न 5 જોઈએ છે. प्रश्न 5 में शू है? तो कि प्रश्न 5 में निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए. तो અહીંયા તમને એક ફકડો આપવામાં આવ્યો છે. તેના અંદરથી તમારે સારાંશ, તેમાંથી તમે શું સમજ્યા તેને ફક્ત 2 થી 3 લીટીમાં તમારે લખીને બતાવવાનું હોય છે. હું સારાંશ વાંચું છું પહેલાં. એને તમારે સારાંશ बतावानो. तो पहलो, नंदवन में एक छोटा सा तालाब था. एक छोटा सा तालाब था. तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था. वह बड़ा सुंदर था. उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था. वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था. एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया.
उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। इस से हमें क्या सारांश मिलता है? दुष्ट के शरारती स्वभाव के कारण सज्जनों को सहन करता पड़ता है। हमें बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। बराबर। तो आज ये फकड़ो जोयो तेमांथी आपणे शुं सारांश मळ्युं, शुं सीख मळी? तो आपणे ए सीख मळी ने के बीजू कोईए शरारत करेली होय तेना स्वभावना कारणे रियलमां कोई एक व्यक्ति खराब होय ने तेना कारणे, दाखला तरीके આપણે સ્કૂલની વાત કરીએ તો સ્કૂલમાં એક બાળક મસ્તીખોર હોય અને તે બાળકના કારણે શિક્ષક બધા જ વિદ્યાર્થીઓને પનિશમેન્ટ આપે તો બીજા બધાએ સહન કરવું પડે ને એક બાળકના લીધે। તો આપણે વગર સોચે સમજે બીજાને દોષી માનવું જોઈએ નહીં। બરાબર। તો આપણને આ જે કહાની આપેલી હતી તેના ઉપરથી આપણને એક શીખ મળે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। સ્વાધ્યાયમાં શું છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए। तो શું છે પહેલો પ્રશ્ન, પહેલી સ્ત્રીને अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो કઈ રીતે કરી હતી? તો આપણે લખીશું उत्तर। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग भी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। बीजो प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो शू लखीशु आपणे? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीजी स्त्री पोताना बाळकनी विशेषतामां शुं कहे छे? तो आपणे शुं उत्तर लखीशुं? तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता बताते हुए कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो शू उत्तर लखीशुं? चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से अपने पुत्र के परिचय में कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्वसा गायक है, न भीम जैसा बलवान, एवं ना ही बृहस्पति का
બૃહસ્પતિશા બુદ્ધિમાન. આ રીતે આપણે ચારો પ્રશ્નના ઉત્તર લખી શકીએ. આ પાઠમાંથી તમને બીજા પણ ઘણા પ્રશ્નો બનાવીને પૂછી શકાય છે. બરાબર. હવે આપણે પ્રશ્ન 2 જોઈશું. પ્રશ્ન 2માં શું છે? નિમ્નલિખિત ઉક્તિ કોણ કિસે કહેતા હૈ લીખીએ. એટલે કે અહીંયા જે તમને વાક્ય આપેલા છે તે વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે તમારે લખવાનું છે. પહેલું, યહી સચ્ચા હીરા હૈ. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? વૃદ્ધ મહિલા ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે ને, તો આપણે શું લખીશું? યહ ઉક્તિ વૃદ્ધ મહિલા તીનોं औरतों से कहती है. બીજું શું છે? માં લાઓ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ. આ ઉક્તિ કોણ બોલે છે? यह उक्ति चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है. तीसરું, सुनो मेरा हीरा गा रहा है. આ વાક્ય કોણ બોલે છે કે મારો હીરો ગાઈ રહ્યો છે? यह उक्ति पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है. ચોથું શું છે? देखो यही है मेरी गोद का हीरा. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? यह उक्ति तीसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों को कहती है. देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है. यह उक्ति दूसरी स्त्री अपनी साथ की स्त्रियों से कहती है. सही है विद्यार्थी मित्रों, આપણું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બરાબર. તો આપણે અહીંયા આપણો વિડીયો પૂર્ણ કરીએ. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.